with chapter number 10, sound. So in this chapter, I will tell you about sound. Sound is a very familiar word. So we use it frequently in our daily life. We hear various sound every day. Some are pleasant while other are unpleasant. ठीक है, बहुत कुछ pleasant होते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा unpleasant होते हैं, some noise कहते हैं, right? So we can say that some of such sounds that are ringing or period bell, the sound produced by friends and teacher, sound produced by dropping out article, these and moving fan. Now from the above example, we see some of the sounds are very loud and prominent. कुछ कैसी होती है, स्लो होती है, that can be hardly heard. The bell that rings in the school is so loud and clear that it reaches to our classroom and building. So we can say that sound plays an important role in our daily life. Without sound, we would not be able to communicate with each other. हम एक दूसरे के साथ communicate नहीं करते. So what is vibration? So when you plug the string of the guitar, you notice that a string starts moving back and forth rapidly. So this is a vibration. So vibration is rapid back and forth movement of the object, which is about its mean position. Sound is produced because of vibration. So sound is produced by a vibrating object. Every source of sound is vibrating object. So every vibrating object, what it produces? Sound. When vibrations are stopped, the sound also stops. And we can say that sound is produced by vibration made by vibrating object. Right? Next, the activity is given to you. How you will observe the vibration? आप दो पेंसिल लीजिए, right? And take a pencil box and rubber band. आप इसको क्या करोगे? आप इसको perform करोगे activity को, and you will see that how the vibration is produced. Now to show the activities varies with the level of water in the cup. आप take a half dozen of metal bowls and tumblers, fill them with the water up to different levels. सबका अलग-अलग level करोगे. आप इंक्रीज करोगे ग्रेजुअली 1 and 2 अदर, एंड नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक इट. ऐसे करके आप स्ट्राइक करोगे. व्हेन यू सी व्हिच टाइप ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, राइट? व्हाट इज टर्निंग फॉर्क? इट इज अ यू शेप सिंगल स्टील पीस विद द हैंडल. द टू आर्म्स ऑफ द टर्निंग फॉर्क इज कॉल्ड प्रॉन्स एंड हैंडल इज कॉल्ड स्टेम. ये एक कन्वीनियंट सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड वाइब्रेशन इन अ लैबोरेटरी, राइट? So activity is given to show that vibrating tuning fork produces sound. Activity is given to you. Next is sound needs a medium to travel. आप sound को एक medium चाहिए होती है travel करने. So we have learned that sound is produced by vibration of an object. It is produced in the form of energy. For vibration to pass through, it is therefore necessary that there must be molecules which receive the vibration and then transfer them. Right? So this is called that sound needs a medium to travel. Now activity to show that sound requires a medium. आप क्या करेंगे? एक अलार्म क्लॉक लेंगे, कंटेनर लेंगे with a lit, cell phone or a rubber tube or a vacuum pump, and you can perform this activity on your own. Right? Then you will see what will be the result of the above activity that you will tell afterwards. Now here are activities to show that sound can travel through solid. आप क्या करें? एक आयरन रॉड लीजिए और उसको ईयर के पास लेके आए, then you will scratch. तो आपको एक साउंड सुनाई देगी नेल की, स्क्रैचिंग साउंड. नाउ टू शो दैट साउंड ट्रैवल थ्रू लिक्विड, अ बेल इन अ टब full of water. Now take a bell and dip it into a full tub full of water. Now ring the bell with one hand, carefully placing one of your ear on the surface. Result क्या होगा? The sound travels through liquid medium, and also we can also say that sound travel faster in liquid medium than in gaseous medium. Right? Next is terms related. We have sound travel in the form of water. This type of motion is to and fro motion, जिसको हम oscillation कहते हैं. Following characteristics होती है frequency, amplitude and time period. First is simple pendulum. It consists of small metal balls suspended from a rigid support with the help of long thread, so that ball can swing easily back and forth. Next is frequency, the number of complete oscillation made by simple pendulum in 1 second. और SI क्या होती है? SI यूनिट क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज, राइट? देन वी हैव एम्पलीट्यूड. व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू इट ईदर साइड. इन फिगर बिलो AC और AB is the amplitude. Time period, time taken by the pendulum to complete one complete oscillation. Then we have characteristics of sound. Characteristics क्या है? Pitch, loudness, quality. टू ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपकी? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एक तो पिच है और एक आपकी लाउडनेस है. फर्स्ट इज पिच. हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश अ श्रिल साउंड?
So we can say that this characteristic of sound को क्या बोला जाता है? Pitch of the sound. So it depends upon the frequency of sound. The pitch of the sound is vibrating with low frequency is low, while pitch of the sound जो vibrate करेगी उसकी greater frequency होगी और ज़्यादा होगी. So women and children must have short vocal cords which produce vibration for greater frequency. They have high pitched shrill voice. The wings of masculine bee vibrate with higher frequency. Next is loudness. Loudness क्या होती है? We use loudness very common in our daily language. Shouting और scream, कोई चिल्ला रहा है तो वो क्या हो गया? Loudness हो गया. We can say that loudness is a characteristic of a sound by which loud sound can be distinguished from the faint sound. Loudness of the sound is directly proportional. क्या है? Directly proportional है to the square of amplitude of vibrating produced by sound waves. So a dole that is strike softly, small amplitude, देखो जिस और आप देख रहे हैं यहाँ पे वेव फॉर्म हो रही है, कोई चिल्ला रहा है, ठीक है, विसिल कर रहा है, सीटी बजा रहा है. देन वी हैव, आप इसको किस में मेजर करते हो? डेसिबल में. देन वी हैव क्वालिटी. सो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड दैट enables us to distinguish between two sounds of the same pitch and loudness produced by two different. It depends upon the waveform of the sound. So quality of sound is called tone, and some vibrating object produces sound in single frequency. So they produce a sound of single frequency जिसको हम basic और fundamental frequency कहते हैं. It is a mixture of sound of other frequencies जिसे हम harmonics कहते हैं, जो क्या देते हैं? richness देते हैं, quality देते हैं sound को. Then we have audible and inaudible. There are countless number of sounds that we hear each day. Some of the sounds are loud and clear and some are so feeble. Right? So we have different inaudible sounds क्या होती है? जिनकी frequency less than 20 Hz. Infrasonics जिनको ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकते. ऑन अदर हैंड, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग इज मोर देन 20,000 Hz, they cannot be heard by human. What we call them ultrasound, right? So audible range क्या है? 20 Hz to 20,000 Hz. Now sound produced by humans. So all of us communicate with each other by speaking. When we speak, the sound is produced and the sound travels through air by vibrating the air column. Now, have you ever experienced vibration in your throat, right? When we keep a hand on our throat while singing, we can feel some vibration. So sound in the human beings is produced by voice box. जो हमारा voice box होता है ना, उससे produce होता है. So when the air passes through air passage, the vocal cords vibrate and produce sound. और जो pitch of sound जो produce होती है is more if the vocal cord is tight and is less if the vocal cord is loose, right? Now activity is given to you about to show reflection of sound and use this for ultrasonic determination. Now the reflection of sound can be used for measuring the depth of the seabed. The apparatus used for this purpose उसको हम क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं, which is carried in the ship, which send ultrasonic vibration from the ship to seabed. और इसको एक apparatus होता है जिसका हम use करते हैं, right? Now the structure and working of ear. This is the ear, you can see here. इसकी वर्किंग पढ़ते हैं. ये आपका क्या हो गया? पीना. दिस इज योर आउटर ईयर, बाहर का. ये आपकी क्या है? वेस्टिबुलर नर्व है. ये कॉचलेला है. दिस इज ईयर ड्रम. दिस इज ईयर कैनाल एंड दिस इज यूस्टेचिनिया ट्यूब, राइट? सो आवर ईयर इज डिवाइडेड इनटू, जो हमारा ईयर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. आउटर ईयर और एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर. फर्स्ट इज आउटर ईयर. एक जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम पीना कहते हैं. व्हाट वी कॉल इट? पिना. दिस लीड्स टू साउंड वेव्स थ्रू द ईयर कैनाल टू ईयर ड्रम एंड द ईयर ड्रम इज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन व्हिच वाइब्रेट्स ऑन रिसीविंग द साउंड वेव. और ये जो वाइब्रेशन होती है इसको हम फर्दर ट्रांसफर करते हैं टू द मिडल ईयर एंड देन टू द इनर, राइट? Next is middle ear, which has 3 bones, which is connected to eardrums, one ear to another. When the eardrum vibrates, जो middle ear होता है वो भी vibrate करना start कर देता है. Now inner ear consists of cochlear, which is filled with fluid. It is received by cochlear and they are sent to the brain in a form of nerve impulse, which interprets the sound on receiving these nerve impulse. Now we have noise and music. What is noise? We hear different types of sound around us. Sound जो भी machine produce कर रही है factory में loudspeaker के through and during functions and moving vehicle, what they produce, they are unpleasant और वो हमारे sound, हमारे ear को affect करते हैं.
सो अनवांटेड, अनप्लीजेंट एंड वेरी लाउड साउंड आर कॉल्ड नॉइज. ठीक है, अगर इसका लॉन्ग टाइम एक्सपोजर होगा इसको हम, इससे क्या होगा, सीरियस हेल्थ hazard. Sound produced by musical instrument like sitar, piano and guitar produce pleasing effect to our ear and mind. So pleasant and soft sound, what we call it music, it does not cause any health hazard. इससे आपको किसी भी तरीके का health hazard नहीं होगा. Now we have musical instrument. Now we have already understood that the sound is produced by vibrating body. We have seen most of the musical instrument जो pleasant sound produce करते हैं, like we have stringed musical instrument, violin, guitar and sitar. Right? It is a musical instrument like tabla, drum, dhola. The sound is produced by stretched membrane, while in case of flute, trumpets and air column inside the instrument vibrates when we blow air into it and produce the musical. Right? Next is noise pollution. Noise can be reason of great discomfort for us. The pollution of the environment with the undesirable sound around us is called noise pollution. Now, what are the harmful effects of noise pollution? First is it may leads to loss of sleep. आपको various health problems हो जाते हैं, जैसे headache, high blood pressure, earache and many diseases. Continuous exposure to noise may result to temporary or permanent loss of hearing. It may also result in lack of concentration. जो आपका concentration level होता है ना, वो कम हो जाता है. Now measures to control the noise pollution. So we should discourage the use of blowing horn. देखा ना, लोग बिना बात की हॉर्न बजाते रहते हैं, वो नहीं करना. Proper use of silencers. Industrial machines में silencers होने चाहिए. People working in area of greater noise should be encouraged to use earplugs. Television, radios, music systems should not be played at high volume. Right? The area of residence should be away from such places. The use of firecrackers should be discouraged as they cause lot of noise as well as air pollution. Right? Now this is all about in this chapter. Let's move to the exercise now. First is pick the correct option. First is sound cannot travel through vacuum. Number of oscillations per second is called, उसे क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी. साउंड इन अ फ्लूट, जो साउंड होती है फ्लूट में, इट इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम्स. द नर्व इम्पल्स इज सेंट टू, जो नर्व इम्पल्स होता है हम उसे किसे भेजते हैं, ब्रेन. नॉइज पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय बर्निंग क्रैकर्स, डिसयूजिंग साइलेंसर या ब्लोइंग हॉर्न्स लाउडली. तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन होती है पर सेकेंड उसको क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी. द डैश इज एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड. वेवलेंथ इज मेजर्ड इन, जो वेवलेंथ होती है हम उसको किसमें मेजर करते हैं, मीटर्स में. अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज. अनप्लीजेंट साउंड क्या होती है, नॉइज होती है. राइट. नेक्स्ट इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, फॉल्स. साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते. फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड, फॉल्स. Frequency is higher to produce shallow sound, it's true. Proper measures should be taken to minimize noise pollution, it's true. The unit of time period is second, true. Now short answers. What is sound and how it is produced? Sound क्या होता है, उसको कैसे produce करा जाता है. What do you mean by pitch of sound? Name the different parts of ear. ठीक है, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर. व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन, वो आपको बताना है. एंड नेक्स्ट लॉन्ग आंसर, व्हाट इज, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है. राइट एन एक्टिविटी शो दैट साउंड प्रोड्यूस थ्रू वायर. अभी मैंने आपको एक्टिविटी जो बताई थी ना, वही एक्टिविटी आपको याद रखनी है. डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. हाउ कैन यू से दैट साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू पास थ्रू. एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर विद लेबल डायग्राम. आपको वर्किंग बतानी है ह्यूमन ईयर की विद द लेबल डायग्राम. राइट. This is all about in this chapter. Hope you understood. Now let's meet in the next class. That's all for today. Thank you.